Hello everyone. In today's video, we will discuss about the sources of revenue receipts. In the last video, we have discussed about the budget receipt and budget expenditure in detail. If you haven't watched yet, just go and watch in the pop-up bar given above. So let us start. Firstly, I will tell you in brief that what is revenue receipts. See, revenue receipts are the receipts the government gains or the income the government gains from the recurring basis. That is from the regular activities of the government. For example, taxes. Fine. Now these do not alter asset and liabilities. There is no change. Now we have sources of revenue receipts. These sources are classified into two types, that is tax revenue and non-tax revenue. See, mostly the government generates their revenue from taxes. But there are many non-tax income also. For example, the gifts given by any foreign country. So we will discuss both the points in detail now. Firstly, what is tax revenue? See, tax revenue is the income generated by the government from taxes. In our day-to-day life, our parents give taxes to the government in the form of, it can be income tax, it can be property tax, land tax, etc. So, tax revenue is further classified into two subtypes, that is direct tax, indirect tax. Now let us know that what are these. See, to differentiate, just remember one point, that you will say it is a direct tax only when the monetary burden cannot be shifted. See, monetary burden means that who has to pay the money to government. Fine. But here in the indirect tax, the monetary burden can be shifted. Can be shifted. That you can say to another person, yes, you have to pay for this. To explain this, I will take an example. Suppose this is Mr. A. Okay, he is a businessman. Okay, he is earning of nearly 12 lakh per annum. So government demands tax from him, say 30,000 as income tax. Just suppose. Now, can Mr. A, just think yourself, can Mr. A say to Mr. B that you please give this amount to government on my behalf? Will Mr. B pay for this? No. He will say, no, why should I? It's your income, the tax is imposed on you, you should pay for this. So A is liable to pay. Okay? Who is liable to pay here? A. And who has to pay? A. So the monetary burden or this is permanent, that it cannot be shifted. इसका मतलब ये है कि अगर A जो है, कोई भी पर्सन है जो लाइबल है पे करने के लिए वो अमाउंट की, गवर्नमेंट कह रही है यू शुड पे मी, एंड वो ही पे कर सकता है, मतलब वो किसी और को नहीं कह देगा कि तुम मेरे बदले पे कर दो. ठीक है. सो मीन्स कि जो लाइबिलिटी टू पे है और जिसने एक्चुअल पेमेंट करनी है, वो जो बर्डन है, इट लाइज ऑन द सेम पर्सन, दैट इज हियर इन केसेस A. ठीक है, बर्डन इज ऑन सेम पर्सन. Fine. So this is about direct tax. जैसे it is income tax, property tax. ठीक है. If I am earning a good income and the government is imposing tax on me, I cannot say to another person that please give the tax for me. ठीक है. So this was direct tax. Now let us come to indirect tax. Indirect tax. Okay, wait. Indirect taxes whose monetary burden can be shifted. So how can you say that monetary burden can be shifted? Take the example of GST. ठीक है? GST, goods and services tax, it is imposed on the goods.
एंड सर्विसेज. तो इनडायरेक्ट टैक्स हमारे इम्पोज ही एक्चुअली गुड्स एंड सर्विसेज पर होते हैं. So there are other kinds of also indirect tax, but here I am, for more clarification, I am talking about GST only. ठीक है. So this is, suppose my producer Mr. X. ठीक है. He sells here no so she sells her goods to retailer Mr. A. ठीक है. This is my say wholesaler. ठीक है. This is producer, this is my wholesaler, and wholesaler further sells his goods to Z. He is my retailer. ठीक है. And ultimately retailer has direct contact with a consumer. ठीक है. So producer, this Mr. X the government imposes GST at the rate 10% on Mr. X that you have to pay me. X further says to wholesaler that you have to pay at the rate 10%. ठीक है. रिटेलर को भी फिर होलसेलर कह देगा you have to pay GST and so as to customer. अब जो कस्टमर अमाउंट दे रहा है वो रिटेलर को दे रहा है, रिटेलर होलसेलर को, होलसेलर प्रोड्यूसर को, एंड प्रोड्यूसर गवर्नमेंट को. तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट को कौन पे कर रहा है? कंज्यूमर. It seems like the government has imposed the tax on producer, but actual में वो तो अपना ले ही लेते हैं, मतलब जैसे अपनी अमाउंट वसूल लेते हैं. ठीक है. तो कंज्यूमर तो किसी को नहीं आगे कह सकता कि दे दो भाई मेरी जगह भी. So consumer has to give the GST himself. So ultimately who is paying GST? Here the consumer. ठीक है. So who was liable to pay? Producer was liable to pay the GST or the indirect tax. But who is actually paying? Consumer. So the actual burden is on someone else. मतलब जो monetary burden था it got shifted. ठीक है. तो जब आपका monetary burden shift हो सकता है मतलब कोई और person liable है पे करने के लिए और कर कोई और रहा है पे, then you will say it as indirect tax. I hope this is clear. So we can move towards the non-tax revenue. See, non-tax revenue, the government generates its income from various sources other than taxes. ठीक है. Here it is other than tax because यहाँ पे direct और indirect दोनों आ रहे हैं. So let us discuss this. Non-tax revenue, like for example, government has invested in any kind of company. ठीक है. और वो कंपनी उन्हें क्या देगी? डिविडेंड. तो गवर्नमेंट के लिए डिविडेंड क्या हो गया? इनकम. फाइन. Then government sometimes sells its share. ठीक है. So when the government is selling off its share, that means the government will, suppose government has earned profit on it. ठीक है. So after selling its share, the profit earned by government also goes into the treasury of the government. So it is also kind of revenue for them. ठीक है. Next is the government also imposes the, there is licensing fees. ठीक है. लाइसेंस फीस भी होती है, दूसरी फीस भी होती है. सो इट कैन बी लाइसेंस फी. आपको किसी भी चीज का परमिशन लेना है पहले गवर्नमेंट से. ठीक है. तो उसके लिए जो वो फी चार्जेस इम्पोज करते हैं, इट इज एक्चुअली कंपल्सरी पेमेंट. यू कैनॉट डिनाई इट. दिस कंपल्सरी पेमेंट इज सिमिलर टू दैट ऑफ टैक्सेस. आप टैक्सेस को भी डिनाई नहीं कर सकते, आपको देना ही पड़ेगा. सिमिलरली द फीस कैन नॉट बी डिनाइड. सो लाइसेंस फीस होगी, रजिस्ट्रेशन फीस होगी. सो ऑल दिस कम्स अंडर द कंपल्सरी पेमेंट ऑफ गवर्नमेंट. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट इज इंटरेस्ट. The government lends loan to the state government. ठीक है. And the interest received on those loans is also kind of income for the government. Fine. Now the next point. It is escheats. See, this is very important point. Mark this, really important. Suppose a person dies. This is Mr. A. He dies without any legal heir. उसका कोई वारिस नहीं है. ठीक है. तो the property owned by Mr. A
will be captured or will be seized by government. गवर्नमेंट कहेगी कि दो, अब ये लैंड, जो सपोज उसके पास लैंड है कि अब लैंड पर मेरा हक है, बिकॉज वो तो मर गया ना, उसके पास कोई लीगल हेयर था. सो दिस इज व्हाट एस्टेट्स इज. ठीक है, तो ये एस्टेट्स से भी द गवर्नमेंट अर्न्स रेवेन्यू. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, it is fines and penalties. See, fines are the charges. ठीक है, penalties भी, that are law breakers. वो चीजें, वो इनकम जो गवर्नमेंट ले रही है लोगों से जो भी लॉ ब्रेक करे. सपोज किसी ने ट्रैफिक लाइट क्रॉस कर दी, ठीक है, ट्रैफिक लाइट क्रॉस करने के बाद उनको फाइन देना पड़ता है. ठीक है, सो इट इज फॉर द लॉ ब्रेकर्स. तो वहां से द गवर्नमेंट इज अर्निंग रेवेन्यू. The next is gifts and grants. This point I have already told that the foreign, suppose any company has given gifts to the government, ठीक है, या any abroad country, any company, anyone who has given gift to government will undergo the process in the government treasury. ठीक है, इधर inflow हो गया. So this is a kind of income for the government. Okay, so gifts and grants. तो ग्रांट्स जैसे कि जब वॉर टाइम होता है, ठीक है, ड्यूरिंग वॉर और एनी काइंड ऑफ पैंडेमिक सिचुएशन, दे नीड फाइनेंशियल हेल्प. गवर्नमेंट नीड्स फाइनेंशियल हेल्प. सो एनी काइंड ऑफ कॉर्पोरेशन, एनी चैरिटी, दोज हु हेल्प देम, सपोज दे हैव गिवन देम द चेक, ठीक है, सो दिस आल्सो गोज इनटू द गवर्नमेंट ट्रेजरी. इससे भी इनको इनकम हुई. द नेक्स्ट इज स्पेशल असेसमेंट. ओके, दिस पॉइंट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. We will discuss it in a good way. Special assessment. See, the government actually works for the social welfare. ठीक है, suppose the government has constructed a metro station. ठीक है, जब उन्होंने मेट्रो स्टेशन डेवलप किया तो उसके आसपास this was a plot of land. ठीक है, the value of this land has appreciated. Why it has appreciated? Because of the construction of this metro. ठीक है, so the owner of land was a person. ठीक है, now she demanded that, this is a girl, she demanded that my land has appreciated. Now the worth of the land has become 15 crores. Earlier it was only rupees 1 crore. Now government says that the increase in your land or the land is appreciated because of the efforts of government, because of my efforts. ठीक है, बिकॉज हमने डेवलपमेंट की इसलिए आपकी लैंड की वैल्यू अप्रिशिएट की. अब आप हमें कोई कंपनसेट करो उसकी जगह. नाउ दैट पर्सन हैज टू कंपनसेट गवर्नमेंट. ठीक है, मान लो गवर्नमेंट इज सेइंग गिव मी रुपीज 1 लाख फॉर दिस. ठीक है, सो नाउ दिस पर्सन हैज टू गिव दिस 1 लाख टू गवर्नमेंट. और वेयर द गवर्नमेंट विल यूज दिस? इन द डेवलपमेंट. ठीक है, वो मेनली जो अपना मान लो मेट्रो बनाई उन्होंने, तो उसकी जो डेवलपमेंट का खर्चा है वो इन्हीं अमाउंट से निकाल लेता है. फिर बहुत सारे जने होंगे ना, सो दे विल टेक दिस अमाउंट टू डेवलप द मेट्रो. ठीक है, वो अपने उसमें से खर्चे निकालने शुरू कर देंगे. सो दिस वाज ऑल अबाउट द सोर्सेज ऑफ द रेवेन्यू रिसीट्स. आई होप दिस इज क्लियर. थैंक यू.